पहले +2 सेकंड ईयर फिजिक्स रो हम स्टार्ट करबा तो ऑप्टिक्स चैप्टर। तो फर्स्ट आंसर है तुम देखना व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स कौन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स is a branch of physics. Optics is a branch of physics in which we study the nature, production and propagation of light. तो मेन जिंस लाइट हम देखमा कोन लाइट ऊपर। तो लाइट रो कोन सब देखबा, तो एठी में देखिबा तमन कोन लाइट रो नेचर, its production and its propagation तो जेतो में एठी पढिया तमर कोन लाइट रो नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन। तो फर्स्ट आंसर हम जानत मन व्हाट डू मीन बाय लाइट। तो लाइट कौन, तो पहले लाइट लगले गोटे इज एन एजेंट। लाइट इज एन एजेंट। तो लाइट इज एन एजेंट which produces in us the sensation of sight, which produces in us the sensation of sight. So light is an agent which produces in us the sensation of sight. The word sensation of sight means what? What do you mean by sensation of sight? Human रो basic पांचटा सेंस गोटे हला तमर कोन टेस्टिंग, सेकंड हला तमर कोन साइटिंग, थर्ड हला तमर टचिंग, फोर्थ हला तमर स्मेलिंग एंड फिफ्थ हला तमर हियरिंग। तो एठी हम जो साइट मींस पले हम जोटा देखिबा, तो हमर गोटे सेंस जो अछि ह्यूमन गोटे सेंस दैट इज देखिबार सेंसटा। तो सेटा हम कहा पय पॉसिबल तमर ड्यू टू लाइट। So light is an agent which produces in us the sensation of sight. तो हमें light रो से due to this light हमें कोन हम भीतर जो सेंस अछि गोटे सेंस जो कोन हमर साइट रो से सेंस ता हमें ऑब्जर्व कर पाछे ड्यू टू लाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोन लाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हला तमर कोन, नेक्स्ट पॉइंट पिले तमर कोन लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। So light is a form of energy. तो एनर्जी रो गोटे फॉर्म एटा। तो एनर्जी ऑलरेडी तमे +2 फर्स्ट ईयर रे पढि देबो दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो एठी तमे कोन एनर्जी माने ऑलरेडी तमे जानछु व्हाट डू मीन बाय एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू सम वर्क। तो हमें लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ता भी तमर गोटे कोन एनर्जी रो गोटे फॉर्म टे, बिकॉज़ यूजिंग लाइट हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हमें हमर जनरल लाइफ रे हमें करि परछे। सिबे हमें कोन लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट हला अबाउट लाइट दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक So light is an electromagnetic wave. पहले electromagnetic wave means कोन? तो ऑलरेडी तो +2 फर्स्ट ईयर पढिছো व्हाट इज वेव। तो वेव रा में जानछ तमर कोन मीडियम रो पार्टिकल ता तमर कोन वाइब्रेट होची आ गोटे सेठी प्रोड्यूस होची तमर गोटे वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस एठी तमर कोन पार्ट हमर मीडियम रो पार्टिकल किछि वाइब्रेट होनी, मीडियम रो पार्टिकल एठी रहिबनी किछि रहि पारे बट दैट सेटा वाइब्रेट होनी तमर। तो एठी कोनटा वाइब्रेट हो ने तमर इलेक्ट्रिक फील्ड आ मैग्नेटिक फील्ड। तो तमर सेटा केमति वाइब्रेट हेबे नाइ दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यदि वेव ता ए डायरेक्शन रे जाउची ताले हमर इलेक्ट्रिक फील्ड ता तमर कोन अलोंग दिस से वाइब्रेट हो आ मैग्नेटिक फील्ड ता अलोंग दिस तमर कोन वाइब्रेट हो आ वेव ता कोन बडी प्रोपगेट हो। दैट मींस लाइक दिस ए टाइप। तो सेटा तमर कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट देखिबा किछटा टर्म दैट इज कनेक्टेड विथ लाइट। तो लाइट संगे जो किछटा टर्म तमर कनेक्ट हेछि से टर्म्स गुडा के देखिबा वन बाय वन।
So there are some terms that is connected with light. So light संगे हमर किछटा term जोटा connected अछि that terms. So terms related to light or connected with light. With light. So what are these terms that are connected with light? So first thing साल पहले हम देखिबा तमरा कोन source. तो फर्स्ट थिंग सेटा तमरा source. What do you mean by source? Source कौन? तो पहले source is a body. तमरा source जोटा हम कहू that is a body. So a source is a body. So a source is a body which produces light in all direction. तो जोटा तमरा कोन जो body ता तमरा कोन light produce करछि in all direction, that is called a source. A source is a body which produces light in all direction. In all direction. So, light is source. So, source is a body which produces light in all direction. So, for example, our sun. Our sun जोटा तुम कहूँ sun produces light. तो से light produce करछि कोन in all the direction. से हमरा only earth को separate करके light दोनी. से कोन करछि all over the universe. तो हमरा कोन distribute करछि तमरा light टा. तो source is a body which produces light in all the direction. So that is called a source. So only the more surya जोटा sun. So that is not only the source. So source may be कोन a body which receives light from another source and scatters it into the surrounding. So source आउ गोटे भी जिंस होई परिबो जोटा हम कोन लाइट से गोटे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को कोन और एक्सटर्नल बॉडी से कोन रिसीव कर परिबो एंड ताकू से ऑल डायरेक्शन में स्कैटर कर पाछि, दैट इज आल्सो कोन तमर सोर्स. तो सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो सोर्स इज अगेन तमर कोन टू टाइप्स. तो source is two types. तो first answer that is तमरो देखबा हम कोन self luminous. Self. तो self luminous source means कोन पले that is the source which has lights of its own. तो जो source रो निजर लाइट अछि ताको हम कोन कहला that is self luminous जोटा निजे जळि परिबो. तो a source, the source which has lights of its own, light of its own, is called self luminous source. For example बिला हम कोन यार एग्जांपल कहि परिबो तमरा. For example तमरा sun तर निजर लाइट अछि. इलेक्ट्रिक बल्ब आउ कोन पेरबो तमरा like candle that is also a self luminous source, etc. These are self luminous source जहार पिले कोन निजर लाइट अछि. ओके नेक्स्ट हला तमरा कोन आउ गोटे टाइप्स ऑफ सोर्स जोटा that is called non luminous source. सेकंड हला कोन non luminous source. non-luminous source. तो ले जहार पे नेचुरल लाइट नथो ताको हम कोन कहबा non luminous source. The source which does not possess light of its own, but it receives light from external source, and scatter it into the surrounding.
scatter it into the surrounding. That is called तमर कोन non-luminous source. For example बोले देखो तो chalk. This chalk receiving light from that electric bulb and से कोन करछि every direction रे से light कोन करछि reflect करछि और scatter करछि. That means याको हमें जो देखिबा every direction मोटे अछि देखि परबी एठी रहबी देखि परबी सेठी रहला जणे देखि परबो तमे अछटे देखि परजो एठी जण रहला समस्त देखि परबे एई चौकटा को because it scattered light in every direction and it receiving light from an external source. So that is called, this type of source is called non-luminous source. For example, this duster, that is also a non-luminous source. For example, this blackboard or green board, that is also a non-luminous source. So जो source external source ru light receive करछि and याको scatter करछि in all direction, that is also called a source, and that is called तमर कोन non-luminous source. Medium. So what do we mean by medium? So medium कोन? So पहले medium is a substance. A medium is a substance. In which light can propagate or tends to propagate. A substance through which light can propagate or tends to propagate. What do you mean by tends to propagate? Propagate means तुम बुझ पाथो. Propagate means light गोटे point to आ गोटे point को transmit हे करथो. That is propagation. Tends to propagate means जो पे try करिवो. Tends means ला try करेगा simply. That is tends to means trying to propagate, or that means tends to propagate means trying to propagate. तो जो substance through देगी तुमरा कोन light ता easily pass कर जाय परिवो और कोन से ठीक न difficult to pass करबे. That means कोन tends to propagate, try करबे से propagate करे. That is also called कोन medium. The medium is a substance through which light can propagate or tends to propagate. पहले जो medium रे हमरा light ता कोन easily pass करबो, that is called transparent medium. और जो medium रे तुम्हारा light ता कोन moderately pass करबो, that means कोन टिके lightly pass करबो, that is called translucent medium. और जो medium रे तुम्हारा light कोन pass करबे, that is called opaque medium. So mainly हमको कोन medium is divided into three types. So it is of three types. गोटे हला फर्स्ट हला तुम्हारा कोन ट्रांसपेरेंट. Transparent means जो मीडियम रा लाइट ता कोन इजीली पास कर पारे. The medium in which light propagate easily. तो जो मीडियम रे हमर लाइट ता इजीली पास कर दिबो, that is called transparent medium. That is called transparent medium. For example, our on glass. For example, glass. Example, another example, water. Another example, most important example, that is our on air, etc. तो जो भी तुम्हारे को लाइट इजीली पास कर लेगा, that is called transparent medium. जो मीडियम रे हमर लाइट ता कोन that is moderately pass करिवो or that is किछिटा pass करिवो in which light propagates partially. The medium. Second हला पिला तमर कोन second type हला तमर कोन that is translucent. So translucent means तमर कोन the medium in which light can propagate partially.
तो जो मीडियम रे हमर लाइट टा पार्शियली पास करबो दैट मीडियम इज कॉल्ड तमर कोन ट्रांसलूसेंट मीडियम LUSCENT TRANS LUSCENT ट्रांसलूसेंट तो द मीडियम in which light can propagate partially. It's called translucent medium. For example, which example? The example है paper, ground glass. तो पेपर मीन्स तुम बुझी पारछ पेपर मीन्स हम जोटा पढु छे पेपर नोटबुक जोटा छे सेही पेपर दैट इज तमर कोन ट्रांसलूसेंट मीडियम एठी लाइट ता तमर कोन किछि किछि देखाइबो एठी जदी तुम गोटे पेपर रखिबो आ जदी गोटे टॉर्च ताको मारिबो ताले कोन देखाइबो एठी किछि किछि लाइट ता आरपड पास करिवो दैट इज तमर कोन पार्शियल पास करछि तो पार्शियल मीन्स दैट मीडियम इज कोन ट्रांसलूसेंट आ गोटे तमर ग्राउंड ग्लास मीन्स जोटा टिके मोटा ग्लास टाइप रो और जोटा टिके देखिबो टी खदड़ टाइप रो थिबो तो सेठी कोन अल्प अल्प लाइट पास करो जोटा पूरा प्लेन थिबो सेठी कोन देखा जातो सेठी कोन हमको इजीली देखाइबो दैट इज कोन तमर ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि अल्प अल्प देखा जो गोटे ग्लास रे पानी रखि जो देखो तो सेठी कोन अल्प अल्प देखाची दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम सेही ग्लास का नाम कोन कहला दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसलूसेंट रो एग्जांपल है तमर कोन पेपर आउ ग्राउंड ग्लास एंड तो तमर थर्ड टाइप ऑफ मीडियम रो थर्ड टाइप का तमर दैट इज योर ओपाक मीडियम that is your opaque medium. So what do you mean by opaque medium? The medium in which light cannot propagate. So जो medium रे हमर light टा cannot propagate that is called तमर कोन opaque medium. So the medium in which light cannot propagate it's called तमर opaque medium तो जो मीडियम रे हमर लाइट टा प्रोपागेट करि परबे दैट इज कॉल्ड तमर opaque medium फॉर एग्जांपल पिला में कोन गोटे नियो तमे कोन गोटे आयरन पीस एनी आयरन पीस नियो तो आयरन पीस को हम जदी लाइट ताको पिले पकेबा ता ऊपर फॉल करबा तो लाइट टा आर पड को तमे जाय परबे दैट मींस हमर जो मीडियम अछि तमर कोन आयरन टा that is a opaque medium because it cannot transmit light in its medium तो तार सही substance हमर कोन लाइट ता पास करि पानी तो that medium is called opaque medium for example तार कोन wood भी तो माने करबे तार एच एग्जांपल तो एग्जांपल यार कोन एग्जांपल तो कोन आयरन wood એટલે जहां भी मीडियम देखो जो कि तमर कोन लाइट प्रोपागेट कर करनी दैट मीडियम इज कॉल्ड तमर कोन opaque medium तो फिर नेक्स्ट टर्म का तमर कोन रे तो रे कोन ए रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ ए रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ along which light can travel in a homogeneous medium तो फॉर एग्जांपल बोले गोटे मीडियम अछि फॉर एग्जांपल होमोजेनियस मीडियम में फॉर एग्जांपल तमर एयर मीडियम हो कि वाटर मीडियम हो कि तमर ग्लास मीडियम हो जोटे कॉन्फ़िगरेशन कोन तमर एवरी पॉइंट रे सेम थिबो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मीडियम तो हमें गोटे जदी एयर नबा एयर मीडियम रो कोन ए पॉइंट रे मु जहा कॉन्फ़िगरेशन थिबो ए पॉइंट रे सेम कॉन्फ़िगरेशन तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मीडियम तो होमोजेनियस मीडियम इन होमोजेनियस मीडियम जदी मु गोटे कंसीडर करछि ए गोटे पॉइंट ए एंड बी यदि अनदर पॉइंट हम कंसीडर करछि तो ए पॉइंट टू बी पॉइंट को हम लाइट जब ट्रांसमिट करबा हम ताको केमसे रिप्रेजेंट करबा तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए रे तो ए रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ गोटे दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ से तमर लाइट रे केमते मूव करबे गोटे स्ट्रेट लाइन पाथ रे मूव करबा फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी आउ ताको केमते रिप्रेजेंट करबा हम गोटे स्ट्रेट लाइन पर गोटे एरो करछि लाइक दिस
तो A point to B point to the light transmit करछि that can be represented as a ray like this. तो गोटे that is a straight line और से straight line गोटे ऊपर गोटे arrow head that is simply gives the direction of propagation. को direction तो light transmit करछि तमर से जो ray तमर जो arrow head टा give करबे तमर कोन direction of propagation. So it is represented by an arrowhead over a or on a straight line. It is represented by an arrowhead on a straight line. So the straight line ऊपर एक arrowhead देते हैं that is represented as a ray, and the arrowhead represents the direction of propagation of light, the direction of propagation of light. Direction of propagation of light. So that is a ray. So next term हला तुम कोना beam. Fourth term हला तुम कोना beam. B E A beam. So what is a beam? A narrow. Sorry. What is a beam? The fourth point हला तुम कोना beam. The beam is a number of rays combined together is form a beam. जदि गोटे number of rays बहुत गुडे rays combine है जदि एका संगे that is called a कोन beam. So a beam, a number of rays combined together is called a beam. A beam is a number of rays combined together. It's called a beam. So a number of rays combined together is called a beam. So there are number of rays. A number of rays combined together is called a beam. And next, beam that is your pencil. So next one pencil. So what do you mean by pencil? पहले ये नोट करवा था ताकि स्क्रीनशॉट ने की तब नोट करिवार तो फोर्थ टर्म हम देखिले दैट इज ए बीम. तो नेक्स्ट टर्म होला तमर कोन पेंसिल. फिफ्थ पेंसिल. तो व्हाट डू मीन बाय पेंसिल? तो पेंसिल कोन ए पेंसिल इज ए नैरो बीम ऑफ लाइट. तो गोटे नैरो बीम ऑफ लाइट. गोटे बीम ऑफ लाइट मींस बहुत बड़ नंबर ऑफ rays combined together is formed a beam. जदि से बीम रो में छोटो पार्ट गोटे नैरो पार्ट नबा that is called a कोन pencil. A pencil is a narrow beam of light. A pencil is a narrow beam of light. A narrow beam of light is called a pencil. Again ले तमर pencil को डिवाइड है 3 टाइप्स. तो एटा हला अगेन तमर कोन 3 टाइप्स. तबले जोटा में बीम कहले दैट इज कोन बहुत गुडे नंबर ऑफ रेज जति तार गोटे छोटो पार्ट नैरो बीम ऑफ लाइट. तो से जो रेज गुडा जति कोन बहुत पाखा पाखी दैट इज कॉल्ड कोन पेंसिल. तो पेंसिल इज अगेन तमर कोन 3 टाइप्स. गोटे हला कन्वर्जिंग और कन्वर्जेंट. तो कन्वर्जेंट सेकंड हला तमर कोन डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आ गोटे तमर कोन parallel. तो 1 by 1 कहि दी. तो व्हाट वी मीन बाय कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट पेंसिल दा हमर कोन ए बीम और इट इज ए पेंसिल इन व्हिच द width of the pencil goes on decreasing as we move forward. तो जतले हम कोन फॉरवर्ड मूव करबा गोटे पेंसिल जतले फॉरवर्ड मूव करबा तार कोन तार width ता तार इनिशियल width जोटा थबो तो कोन फाइनली सेरा कोन डिक्रीज हे जिवो. से width ता जोटा इनिशियली अछि से कोन मूव कला पर से कोन डिक्रीज हे जिवो तार width ता.
that is called converging. The pencil in which the width the width of pencil goes on decreasing as we move forward. तो जेतले हम फॉरवर्ड मूव करबा then the width टा converti decrease ହେଇଯିବ. For example this like this. Initial width जोटा सेटा कोन फाइनल सेटा कोन डिक्रीज हे जाछि एंड फाइनली से गोटे पॉइंट से माने कोन होबे गोटे पॉइंट से माने कन्वर्ज होला वाला देखै काम करी. So that is called कोन convergent or convergent B. तो सेकंड टाइप होला तमर कोन divergent. So divergent pencil कोन the pencil in which the width goes on increasing. तो जो पेंसिल जे तमरा विथ टा इनिशियली कोन थिबो एंड फाइनली से कोन हो इंक्रीज हे जिवो से विथ टा इनिशियली जोटा थिबो तर विथ से फाइनली कोन हो इंक्रीज हे जिवो जते तमर कोन फॉरवर्ड मूव करबो हमरो रेज गुडा. तो द पेंसिल in which the width of pencil goes on increasing as we move forward. तो केमे कोन तमरा फॉरवर्ड मूव कले विथ टा कोन इंक्रीज हे जिवो एटी कोन होतला डिक्रीज हे जातला एटी कोन उल्टा होता. दैट मींस लाइक दिस. तो सेही पिले हमें पेंसिल गुडा ए जो रेज गुडा को फॉरवर्ड डायरेक्शन रे मूव कले से पेंसिल गुडा को गोटे पॉइंट से माने मिसेनी तो एटी कोन करबा हम जे तो को बैकवर्ड डायरेक्शन रे कोन करबा ताको प्रोसीड करबा ताले से रेज गुडा को गोटे पॉइंट रेठु से कहबे माने डाइवर्ज ला वाला देखै द डाइवर्ज मींस गोटे पॉइंट बाहरला टाइप देखाबे लाइक दिस. तो एठी जे हम ताको बैकवर्ड डायरेक्शन ताको कोन करबा जदी मूव करबा ताले कहबो से रेज गुडा को गोटे पॉइंट रुस माने कहबे डाइवर्ज ला वाला देखाबे. तो दैट इज कॉल्ड तमर कोन डाइवर्जेंट पेंसिल. एंड नेक्स्ट हला तमर कोन पैरेलल पेंसिल. थर्ड हला तमर कोन पैरेलल. तो पैरेलल पेंसिल कोन द पेंसिल in which the width of the pencil remains constant throughout the propagation. तो जोटी तमर कोन रेज गुडा को तर width पे कोन डिक्रीज होबे कि इंक्रीज होबे दैट मींस कोन दे आर पैरेलल. The pencil in which the width of the pencil remains constant throughout the motion is called तमर कोन parallel pencil. The pencil in which the width of pencil remains constant throughout the motion it's called or simply throughout the motion that is called parallel pencil. Okay, तो एठी तमरा फिगर टा केमते को टाइप हबो एठी पैरेलल तो तमरा विड्थ टा कहबो कांस्टेंट. So that is called तमरा parallel pencil. And these are mainly basic जोटा related term तमरा का संगे तमरा लाइट संगे एति के हला तमरा मेन terms that are related with light.